Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my worthy faculty members and speakers. I'm thankful to Mr. Nabeel for having me here and giving me this opportunity, and I'm also thankful to Mustafa. We were batchmates in Syed University, has also helped me a lot. So coming towards my topic of presentation, or rather my talk of the day, it is AI in legal informatics. How to implement legal informatics in how to implement AI in legal informatics. फर्स्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि लीगल इन्फॉर्मेटिक्स है क्या, लॉ और आईटी को हम किस तरह से कंबाइन करते हैं, एंड देन उसके बाद एआई की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे इन लीगल इन्फॉर्मेटिक्स. लीगल इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? द वर्ड लीगल, द लॉ एंड इन्फॉर्मेटिक्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. व्हाट इट डज, ये करता क्या है? इट इंटेंड्स टू collect, analyze, organize the legal data. Legal data क्या होता है हम इस पर आगे इंशाल्लाह बात करेंगे. और इससे फिर हमें हासिल क्या होता है? What are the results of combining of using the legal tech? It improves efficiency and accuracy of the legal processes such as drafting and the legal research. These are two main things which we deal in our day-to-day tasks. Jafi साहब was be well aware with this. हमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो legal drafting और हमें legal research का होता है. लीगल इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हुए हम अपने इन दोनों जो हमारे मुश्किल काम है उनको आसान बनाने की कोशिश करते हैं. How technology is infiltrating in law? We have multiple applications, but the most three are the AI, machine learning, and the blockchain technologies that has been widely used for document automation, legal research, and predictive analysis. These three are the most widely used applications of legal informatics. Legal knowledge representation. For us, representing legal knowledge is very easy. हमारे लिए समझना बहुत आसान है कि legal terminologies, taxonomies इस सब की क्या होती हैं. बट इसको अगर हम आईटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें इसको किसी जैसे हमारे कोई क्लाइंट आता है तो उसको समझाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर, वेल मेंटेन स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसको हम उसको एक आसानी से बात समझा सकें. जो लीगल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली वो मशीन रीडेबल फॉर्म या एक ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्मेट होता है. इसमें हम लीगल नॉलेज ग्राफ्स बनाते हैं एंड विच हेल्प्स अस इन ऑटोमेटिक रीजनिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एंड इन मेकिंग अस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स. What we do in legal informatics is the legal research and analysis. Using legal informatics, we can make image analysis, textual analysis using OCR, object recognition and computer vision. And then we can, in legal AI, we can do contract analysis, intelligent interfaces, and legal data research. And then we can do work with the audio and videos, whatever the matter come for us. Electronic discovery, e-discovery. Basically, when we use informatics, when we have any case or anything, when it's a legal data, we have a bunch of electronic files, documents, emails, audios, videos, and then when we have to retrieve it, this whole process of retrieving the electronic documents is called e-discovery. ESI, it helps us in developing and analyzing the large volumes of data, which supports us in litigation. For instance, we have data and we want to prove our evidence. So we have digital forensics, we have audio video analysis, so we can enhance and we can fortify our evidence when we present in the court. This is the e-discovery reference model. So we get information, we get data, and then we identify it if it is useful data for us, and then we do two things with it. We preserve it and further collect more data. In these two steps, we do the processing, then we analyze it, and then we further review it. And after
we do all these steps, we present it before. For instance, हम अदालत में ये सारी चीज़ें करके लेके जाते हैं और फिर हम वहाँ पे पेश करते हैं. पर्टिकुलरली इन क्रिमिनल लिटिगेशन हम अपनी सारी ई डिस्कवरी करके हम अपना केस वहाँ प्रेजेंट करते हैं. तो इस सारी एक्सरसाइज का जो रिज़ल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि फ़ैसला हमारे हक़ में होता है. लीगल डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन. लीगल डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन इज़ क्रिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. जो हमारी ड्राफ्टिंग एक पर्टिकुलर एक हमारी फील्ड है लॉ में, उसमें हमें लीगल डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन करनी होती है. लीगल डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन को जो अगर मैं प्रिसाइसली बताऊं तो इट हैज़ टेम्पलेट्स ऑलरेडी. हमें वहाँ पे जाके सिर्फ अपनी जो हमारी रिक्वायर्ड हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर इंस्टेंस हमें एक एग्रीमेंट करवाना है, सो मुझे उस इन्वायरमेंट में जाके सिर्फ ये बताना है हुआ द पार्टीज़, कंसिडरेशन क्या है और किस बारे में सेल हो रही है. मुझे सिर्फ ये चीज़ें देनी है और उस ऑलरेडी डिज़ाइन टेम्पलेट के थ्रू हमें वो सारा कॉन्ट्रैक्ट बना के मिल जाएगा, वो सारा एग्रीमेंट मिल जाएगा. सो दिस इज़ हाउ द लीगल डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन वर्क. वी हैव टेम्पलेट्स, वी गिव देम द क्वेश्चन एंड द आंसर, and then bingo, we have a document ready in 10 minutes. Privacy and security are the two of the most important topics in legal informatics, because legal data बहुत important होता है. इसकी security और privacy बहुत important है, क्योंकि इसमें ऐसे sensitive चीज़ें होती हैं कि अगर for instance वो leak हो जाती हैं तो it can be very much उसमें हमें जो impartiality होती है केस की वो ख़राब हो सकती है. Through legal informatics, we can protect the data, we can make it more secure using cyber security applications, and we can encrypt the data and the ethical and the legal considerations जो हमारी होती हैं उसको हम AI और blockchain के through काफ़ी हम we can use for the betterment. So this was the part of legal informatics. मैंने बहुत I hope मैं अपना कन्वे कर सकाऊंगा कि legal informatics होती क्या है. अब हम AI को legal informatics में किस तरह से कर सकते हैं. Legal informatics basically bit traditional, उसमें थोड़ा सा स्टिल ह्यूमन पावर चाहिए होती है. अब AI की एप्लीकेशन लीगल इन्फॉर्मेटिक्स में किस तरह से हो सकती है. So this is sort of a quote. The integration of technology in law is necessary to develop a modern legal system that can address increased complexity and increased client demand. So the purpose to implement AI in the legal industry, in the legal domain, is to expedite the process, is to make things easy for the advocates and for the litigants, and to give the desired outputs. AI के बारे में हमारे वर्दी स्पीकर्स ने काफ़ी बात की और उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो आई विल बी स्किपिंग दिट पार्ट. सो AI इन लीगल इन्फॉर्मेटिक्स, इट इज़ ब्रिंगिंग ऑटोमेशन इन द लीगल डोमेन. हमारे पास मोस्टली जो अब सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड बन रहे हैं, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर रॉबस्ट ड्यू टू द पावर ऑफ AI. जो AI की सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है, जो उसके सब डिसिप्लिन्स हैं, दे आर मशीन लर्निंग, NLP, डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, जो कि लीगल डोमेन में काफ़ी इनकी एप्लीकेशन हैं. दे आर मेकिंग द वर्क ईजी. We need three things to implement AI in the legal domain, in legal informatics. Number one is the domain expert. We need lawyers for that, ताकि वो लीगल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो भी नीडफुल है फ्रॉम द लीगल इंडस्ट्री, वो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकें और वो उसको इंटीग्रेट करा सकें. देन वी नीड क्वालिटी डेटा. एज हमारे जो फर्स्ट स्पीकर थे उन्होंने जो बात की थी, ही सेड दैट AI इज़ डेटा. टू इम्प्लीमेंट AI वी नीड डेटा. डेटा के बगैर मशीन लर्निंग, NLP काम नहीं कर सकती. सो वी नीड यूजफुल डेटा टू इम्प्लीमेंट AI. एंड देन वी नीड AI एक्सपर्ट, जो कि एल्गोरिथम्स को डेटा पे थ्रू द लीगल एक्सपर्ट इम्प्लीमेंट कर सकें. So this is a research which shows that how much lawyers or the people from in the law field are using AI. It is a survey conducted by American Bar Association in 2022. 65% of the respondents claim that they are receiving trainings of or educations about emerging technologies like AI, and they find it
somewhat important or very important. So this is how the world is being changed by AI. अमेरिका या दूसरी जो लीडिंग कंट्रीज हैं उसमें they are now getting trained, जो law professionals हैं, though they have nothing to do with the AI, but still to expedite their work, अपनी मुश्किल आसान करने के लिए, अपने मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए वो AI को यूज़ कर रहे हैं. This is the implementation or a framework of legal informatics and industry, the IT industry. We can see that the main domains of the legal industries are the quantum computing, AI, machine learning, big data. And then we have, from the legal side, we have law schools, the taxonomies, and from further, if we simplify or classify it, we have some laws relating to the cyber. And then the operating parameters of the law are for sustainable legal tech, and then AI robot lawyers. And when we see what governs all the law, all the legal paradigms, we have the courts, the parliament, and what are the challenges that we face while implementing the legal informatics are briefly I will be explaining the data protection, data storage, e-governance, and what is the final product of this. If we implement all this framework, then what we get? We get sustainable legal technology, we get blockchain technology, we get smart legal contracts, and then we get cybernetics. लीगल डेटा, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैंने जिक्र किया था स्टार्ट में कि लीगल डेटा क्या होता है, डेटा की क्या इंपॉर्टेंस होती है. सो फर्दर आई विल बी टेकिंग कि लीगल डेटा क्या होता है, उसकी जो मेजर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी सोर्सेज क्या होती हैं. Legal data is the data of the court, of the attorneys. It benefits industry so we can use legal data for legal analytics, case research, and due diligence processes. So these are the sources of data. We have two sources, primary and secondary. In primary sources, we have the legislation, and legislature is further divided in the federal, the provincial, and the administrative law. So इसको हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, ये डेटा हमें कैसे मिलता है. ये जब फर्दर हमारे वर्दी स्पीकर्स और बात करेंगे तो उसमें भी आसान होगी, और जब इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में स्टार्टअप्स बनेंगे और जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो दे विल बी मच फेमिलियर एंड कंजर्वेड विद द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द लॉ. The law that the assemblies legislate, जो कानून साजी का अमल होता है, जो कानून साजी होती है, that is called the legislature, that is the source of law. And then another primary source we have is of the cases. We have case laws, we have legal research data. Case laws वो चीज़ होती है जो कि हायर कोर्ट्स का, सुपीरियर कोर्ट्स का एक सेटल प्रिंसिपल होता है. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इन इंडस्ट्री, हम एक हमारा जो एक बेंचमार्क होता है प्रोडक्ट या कोई ऐसे एल्गोरिथम होता है, हम उसको कॉपी करते हैं. वी ट्राई टू लाइन अप आवरसेल्फ विद दैट. इन एकेडेमिया हम स्टेट ऑफ आर्ट वर्क कहते हैं, हम अपना काम उसके अकॉर्डिंग्स में बनाते हैं. सिमिलरली केस लॉज वो होते हैं जो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने प्रेसिडेंट्स या प्रिंसिपल सेट किए होते हैं. तो दिस इज़ द सेकेंड अनदर सोर्स ऑफ लॉ. In secondary source, we have legal commentaries done by the jurist. We have textbook and journal articles. Now we will discuss the use cases and the possibilities. हमने अब तक देखा कि legal informatics क्या होती है, हमने देखा AI और legal informatics या legal industry किस तरह से चल सकती है. Then हमने देखा कि legal data क्या होता है. अब हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कौन से यूज़ केसेस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड या पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. AI किस तरह से लीगल इन्फॉर्मेटिक्स के जो वंडर्स हैं AI के, वो किस तरह से इन्हेंस कर रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेटिक्स. Rules interact with tools. So when we implement AI, which is the tool, and then when we implemented AI, it is the rules. The foremost part is the prediction of litigation outcome. So previously was used what happened was कि जो computational हमारे statistics और computational चीज़ें होती थी, हम उनसे अपने outcomes को predict करते थे.
उसके बाद then came AI, and the branch of machine learning rapidly grew in, and then what happened के information लेती थी machine learning models, take information and then they predict outcome on the basis of the pattern, the analysis they do, and then it identifies the pattern, the corpus of the document, and then they predict the outcomes of any litigation. That makes the work easy for the judges and for the lawyers. So this is the flow of prediction of litigation. We have the set of judgments, we have a data set. Now you know what is legal data. So we have that data set, we put it into a model, it does feature extraction, which means that उसमें से वो patterns निकालता है, वो कुछ चीज़ें निकालता है, for instance वो उसमें से कानून निकालता है, उसके sections निकालता है. These are the features of any implementation. उसके बाद वो जो फीचर एक्सट्रैक्शन होता है वो डेटाबेस में जाता है, देन और ऑल द प्री प्रोसेसिंग इज़ डन, उसको साफ सुथराई की जाती है उस डेटा की, एंड देन इट इज़ क्लासिफाइड, द परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन इज़ डन, एंड देन द डिसीजन, द प्रेडिक्शन इज़ मेक. So to further corroborate what I have said, I have brought some studies. मैं अपने जो मैंने बात की उसको सबूत के साथ मैं साबित करना चाहूँगा. French Court of Cassation and European Court of Human Rights are widely using machine learning models to predict outcome. It is also widely used in Australian Federal Court. A study has been published by some French researchers which gave an output that predicted the case ruling of French Supreme Court with an accuracy of 92%. And similarly, a study has been published by some US researchers where they predicted decisions of US Supreme Court with an accuracy of 71.9%. Legal research. We do legal research to find relevant case laws and something that can benefit us. So modern legal research platforms help us in saving our time, improving results. The most widely used research tools are LexisNexis, Austri, which can help us in finding relevant case laws and finding relevant documents that can be benefited for us. Contract management. Contract management is, for instance, for lawyers, we do also make contracts for them. हम contracts करवाते हैं parties के. So हमारे पास जो एक task आता है to make the contracts, lengthy contracts. बहुत जब बड़ी firms होती हैं तो उनके बड़े-बड़े contracts बनाने पड़ते हैं, which is a very difficult task to be honest. So using AI, what we do, we already have the templates. What we do is हम दोनों parties से हम उनकी जो clauses होते हैं वो लेते हैं, and then define and extract useful information, and then we just fit it in the model. So what happens then? A contract is generated, which has reports and some visualizations. Automated decision making. The most fruitful part of AI is the automated decision making. It helps the judges in deciding the matters. By analyzing the past cases of what has been done on a particular matter, वो सारे cases जो data set में होते हैं उनको use करते हुए, what it does, when if you look at the diagram, a new case comes and then the data of the past data has been retrieved, and then it is further used, and then the case is solved and further things are done. So what happened in New South Wales, there are similar programs being done. So using, they decided, the Judicial Commission of New South Wales introduced bail assistance program, which seeks to guide decision makers. In China, a judge assistance program was used to automate the decision-making system, and even in Pakistan, a judge used ChatGPT to give a decision. So this is how AI is supporting the decision-making skills. Due diligence. AI can be used for the due diligence of the contracts. So it can help us in spot variations in the documents, in the contracts particularly.
So now we have discussed कि किस तरह से यूज़ हो सकता है. अब हम देखेंगे किस तरह से यूज़ हो रहा है widely. We will be discussing the law tech startups. So जितने भी अभी तक मैंने यूज़ के डिस्कस किए थे, मोस्टली इस पिक्चर में उन सारे यूज़ केसेस के स्टार्टअप्स हैं. If you look, we have legal firm or management suite, we have enterprise, we have B2C legal tool, we have legal research, we have e-discovery startups and tools, we have contract management, analytics, information. So there's a chunk of tools that are being widely used to assist the lawyers, to assist the judges in the industry. इसमें से हम चंद जो इम्पोर्टेंट और जो वाइडली यूज्ड टूल्स हैं उन पर बात करेंगे. The most important is Ross Intelligence. It was founded in 2014. It uses NLP, natural language processing, to answer the research questions. जब हम जो हमारे ML experts हैं, they would be familiar with NLP. And जब उसमें हम NLP is basically deals with the words. So it can be useful in analysis of the documents. Lex Machina is a similar NLP-based platform to predict the outcomes. ये वीडियो प्ले कर दें. And machine learning technology So this is the demo of Lex Machina. Enormous amounts of data into usable knowledge, detecting patterns and making connections that we as humans cannot without the assistance of this advanced technology. It is through this AI that Lexus Answers understands your research question and anticipates where you'd like to go up front, ultimately getting you to more relevant answers more quickly. Lexus Answers learns from your behavior to narrow your search automatically and suggests a search query as you type. The result is found within the Lexus Answers card, delivering a clear, authoritative answer right at the top of your results. All answer cards include a citation to the answer source, which you're able to So जो हमारी लीगल रिसर्च थी, हमें जो केस लॉज ढूंढने होते थे, तो इस तरह से हमारे जो AI टूल है उसने हमारा काम आसान कर दिया. हमने सिर्फ एक पॉइंट जाके लिखा कि हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के एलिमेंट चाहिए. उसने हमें एक बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ केस लॉज रिप्रोड्यूस करके दे दिए, हमें डेटा में से ला के दे दिए, जिसमें से हम हमारे सेटल प्रिंसिपल्स हैं. अब हमें यहाँ से सिर्फ चीज़ को लेना है और अपने पास उसको एडजस्ट करना है. So, ये एक सर्वे है जिसमें बताया गया है कि लॉ टेक स्टार्टअप्स बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, एंड बाय 2025 they will achieve a revenue of $2.5 billion. So this is how the big the law tech industry is. Another AI tool is Kira system. Basically Kira system को भी हम जो यूज़ करते हैं अपने इसी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. इसका बेसिक काम है to identify, extract and analyze the contracts and document contract management के लिए basically Kira tool यूज़ होता है. इसका भी एक शॉर्ट सा डेमो हम देख लेते हैं. We're in a e-discovery database. There's 425,505 documents, and these are documents from the Enron dataset. What's new is Cecilia. I can ask Cecilia specific questions about these documents in plain English and get answers, also in plain English. Now imagine I'm an attorney at FERC and I've just received Enron's documents. I can use Cecilia to quickly understand what happened without needing to know anything about syntax or without needing to review a single document. For example, I'm going to type what happened in California. And you'll see I get an answer that's specific to just the documents in this database. It references the power crisis in the early 2000s. Legal teams across the world are working smarter. Instead of spending countless hours drowning in the fine print of contracts, they're using artificial intelligence to review and analyze them in minutes. Every hour saved is now spent wisely, closing deals,
building new business and delivering value to clients. That software is called Kira, the award-winning contract review and analysis AI. Kira is trained by lawyers to find hundreds of clauses and discrepancies across due diligence, lease abstraction, compliance, deal points, and more. Begin by importing your document sets. Kira can read, identify, and extract information from almost any format. Then, gets to work. In minutes, Kira will process your documents to flag clauses, risks, and information that is significant to you. Use Kira's streamlined interface to quickly summarize key findings. Then, export a report in your preferred format. Done. Need to flag information unique to your legal team? Add your own custom information and Kira will automatically flag it in your documents, every time. Kira. So this is how the Kira works for document analysis. So another platform is the Disco. और उसकी वीडियो हमने डेमो वीडियो हमने उसकी देखी. ओके उसके बाद कुछ स्टार्टअप से फॉर द केस लॉज ढूंढने के लिए और ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट के लिए. ड्यू टू टाइम आई एम समराइजिंग माय प्रेजेंटेशन. सो द चैलेंजेस विल बी फर्दर एक्सप्लेन बाय अनदर स्पीकर. तो हमें चैलेंजेस जो फेस होते हैं दे आर द प्राइवेसी चैलेंजेस एंड डेटा सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द फोरमोस्ट चैलेंज इज़ ऑफ द लीगल ऑफ द एक्सपर्ट चैलेंज. हमारे पास जो ML एक्सपर्ट्स हैं उनकी बहुत कमी है टू इम्प्लीमेंट द AI in law. That's all from my side. बहुत बहुत शुक्रिया.